Namaskar, मैं Krishna Nadimpalli. I'm candidate for Canberra Liberals for Yerrabi constituency, and I'm standing for the elections to serve you and to serve at a bigger level and representing you. I will be your voice at the assembly, ACT assembly. So that's the what I have done last 10 years or 20 years for the community, and I'll be doing that, continuing that at a different level to make a difference for all of you, all the Canberrans. So that's why I'm standing for the elections this time. And thank you very much for Radio Manpasand, and सुनते रहिए, लगे रहिए रेडियो मनपसंद तड़का लगा के. थैंक यू. मेरे साथ इस समय स्टूडियो में जुड़ गए हैं ये हमारे बड़े मनपसंद फैन, फॉलोअर, लिसनर, वेल विशर रह चुके हैं डॉक्टर कृष्णा नदिम्पली. आज नए रूप में, नए अवतार में, नए वेशभूषा में आए हैं एंड ही स्टैंडिंग फॉर एसीटी इलेक्शंस जो कि होने वाले हैं सैटरडे 19 अक्टूबर 2024 को, एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग कैनबरा लिबरल्स पार्टी एंड ही इज अ कैंडिडेट फॉर येराबी. कृष्णा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे रेडियो मनपसंद के प्रोग्राम में. और बताइए कैसा फील हो रहा है आपको? ये पहले चीज धन्यवाद मनीष जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और धन्यवाद फॉर आपका श्रोताओं के लिए, और इतना मनपसंद से आपका बातें सुनते हैं, आपका गाने सुनते हैं, और सब कुछ तड़का लगा के होता है. और एक सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, सबको स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं. अभी इस वीक में हमारा इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशंस हो रहा है, एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट. एंड वो नाम सुनते ही वो गूस बम्प्स हो जाते हैं अपना. सो भारत का इंडिपेंडेंस डे, और भारत का कुछ भी सुनने में वो गूस बम्प्स होते हैं, तो इसलिए सबका शुभकामनाएं है. इस इलेक्शंस में फिर से कूद पड़े. तो जो लोग नहीं जानते, 4 साल पहले आप इसी इलेक्शंस में खड़े हुए थे और आपसे बातें भी हुई थी, आपके बारे में जाना था. और लेकिन जो अभी नए ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स बने हैं या नए माइग्रेंट्स हमारे कैनबरा में एसीटी में आए हैं, तो उनको आप बताइए कि आप डॉक्टर कृष्णा नदिम्पली कौन है, और बताइए आपको OAM अवार्ड भी मिल चुका है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल का भी अवार्ड मिल चुका है, आपको एक गोल्ड मेडल मिल चुका है, जैसे बोलते हैं यू हैव आल्सो पार्ट ऑफ दिस. हमारे कम्युनिटी के ओलंपिक्स में आपने भाग लिया, बहुत काम किया है, लेकिन अपने बारे में बताइए. पहले चीज, मैं इंडिया में साउथ इंडिया से हूँ, बट मैंने इंडिया में हर जगह में रह चुका हूँ. IIT रुड़की से मेरा मास्टर्स किया, फिर उसके बाद गुजरात में 2 साल, उदयपुर में 4 साल, और नागपुर में 8 साल. वो पूरा इंडिया में घूम चुका हूँ, और इंडिया का मिट्टी का जो सर्वे किया था, सॉइल सर्वे, और राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सब स्टेट्स घूम चुका हूँ. और यहाँ 25 साल हो गए मेरा, 24 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया के. 24 साल से मैं सबसे ज़्यादा मैं जियो साइंस ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट था, और नेचुरल हैजार्ड्स और डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का बहुत कंट्रीब्यूशन मैंने किया है. जो सिस्टम मैंने बनाया उसका वजह से पहले 6 महीना लगता था ऑस्ट्रेलिया को वो इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए, बट अभी फोरकास्ट करते हैं ये इम्पैक्ट होने वाला है. So, and I'm so happy with professional achievements. और कम्युनिटी में तो ये मेरा पैशन है. मैं बहुत सारा एसोसिएशंस बनाया, और उनको सस्टेनेबल पाथ में फाइनेंशियली, और जैसा वो उनका एक क्या करना चाहिए वो गोल सब सेट किया था. वो आप फिनैक्ट का ले लीजिए या नहीं है, तो आप जो लोग बात करते थे गंगालैंड में हमारे लिए टेम्पल नहीं है, बट वहाँ उसके लिए अपना हिंदूज के लिए मैंने 10 साल पूरा कोशिश किया, और ज़मीन लेके आया कैबिनेट से, और 1.5 मिलियन रेज करके दिया. और ऐसा वाला बहुत सारे चीज़, अभी जैसा आपका रेफ्यूजीज का चिल्ड्रन का एजुकेशन के लिए मैं बहुत काम कर रहा हूँ आजकल. तो ये सब चीज़ देखते हुए मेरे को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला हुआ था. ये मेरा सोशल वर्क है. अब मेरा टाइम आ गया है, और मेरा फैमिली यहाँ मैंने फैमिली रेज्ड इन कैनबरा. सो कैनबरा हम मेरे लिए और हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, बट दिस इज द टाइम टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, गिव इट बैक टू कैनबरा. सो इसीलिए मैं सोचा था
ए पॉलिटिक्स इज द पावरफुल थिंग, और पॉलिटिक्स वो सबका स्टेट को नहीं है और लोकल का नहीं है और देश का नहीं है, पूरा दुनिया को चलाती है राजनीति। और मैं प्रोफेशनली पॉलिटिशियन नहीं हूँ, बट जो सेवा करने के लिए आई हैव टेकन दिस व्हीकल सो दैट आई कैन डू बिगर थिंग्स जो पूरा लोगों को, कैनबेरा को और ऑस्ट्रेलिया को वो इम्पैक्ट करेगा और एक अच्छा सोसाइटी बनाएंगे। तो इसका वजह से मैंने ये पॉलिटिक्स का पाथ चुना। और ये आप कह रहे थे 2020 में मैंने ट्राई किया, बट अभी दोबारा फिर आ रहा हूँ। आज यहाँ खड़ा हूँ मैं। आपने अपने बारे में बताया, लेकिन अभी आप करेंटली जॉब में हैं या आपने रिटायर कर गए हैं या जॉब कर रहे हैं, साथ में ही चल रहा है? अगस्त 15 को मैं आजाद हो रहा हूँ अरे नौकरी से। अच्छा, रियली? अरे वाह। तो मैं ऑलरेडी रिटायर हो चुका हूँ, बट अभी थोड़ा सा लीव्स बाकी है। 14 अगस्त तक मेरा लीव्स है, 15 अगस्त को मैं आजाद हूँ, वो पूरा रिटायर्ड हूँ और 100% कम्युनिटी का सेवा में अर्पित हूँ। क्या बात। तो कैसे आपको लगा कि आपने बहुत सारे कम्युनिटी काम किए, ये तो मैं हम सब जानते हैं, और जो लोग यहाँ काफी सालों से हैं, आपको देखा भी है कि अभी फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन फिनेक्ट के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और उसके लिए आपको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल भी मिला है, जो आपने कम्युनिटी वर्क किया। लेकिन कब आपको लगा कि इलेक्शन में कूदना है, कूद पड़ना, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम? मैं तो ये काम तो कर ही रहा था, बट देर आर फ्यू थिंग्स मनीष जी, ये ठीक नहीं चल रहा है मेरे लिए। मैं ये फील कर रहा हूँ। मैं आपको, आप जानते ही हैं, मैं तो आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग बोर्ड का स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र हूँ। सो प्रिजनर्स के लिए मैंने रिहैब प्रोग्राम्स का काम शुरू किया था। और जो ड्रग्स का जो चल रहा है, जो डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ड्रग्स का बोल दीजिए, या हर एक घर में 2 मैरिजुआना प्लांट्स को कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बच्चों को और टीनेजर्स को एक डिफरेंट ओपिनियन और डिफरेंट परसेप्शन देती है। और इसको मैंने रोकने के लिए ट्राई किया था, बट वो नहीं कर पाया। और देर आर वो जो वेलनेस का, जो मेंटल हेल्थ का करना चाहता था, वो नहीं कर पाया। और अभी हमारा कम्युनिटी के तो मैं कर ही रहा हूँ, इसके लिए मेरे को कोई पोजीशन का जरूरी नहीं है। आज मैं सभी कम्युनिटी पोजीशन से बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि सभी डोर्स मैंने खुद क्लोज किया है, क्योंकि आई डोंट वांट टू यूज और कॉन्फ्लिक्ट विथ माय कम्युनिटी। मैं जब पॉलिटिकल में जा रहे हैं तो पॉलिटिकल का ही बात करते हैं, तो इसलिए अब वो बिगर लेवल में ये पूरा कैनबेरा को इम्पैक्ट लाना है, या पूरा अपना कम्युनिटी का वैल्यूज, जो अपना जो एथिकल वैल्यूज हम जो लेके आए हैं, और वी ऑल फील दैट दैट इज द बेस्ट व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम इन आवर चाइल्डहुड और फ्रॉम आवर कल्चर, वो हम बच्चों को दे सकते हैं, वो हमारा ग्रैंड चिल्ड्रन को दे सकते हैं, बट वो नहीं हो पाएगा। तो मैं सोचा था दिस इज ए बिगर प्लेटफॉर्म टू डू दैट सर्विस फॉर एवरीवन। तो इसका वजह से मैं सोचा था दिस विल बी द प्लेटफॉर्म आई नीड टू गो, और कम्युनिटी नीड टू गो। एंड आई एम ऑलरेडी 65 ईयर्स मनीष जी, और ये मेरा सेंचुरीज मारने का या डबल सेंचुरी मारने का गेम नहीं है। और मैं एक प्लेटफॉर्म बना के कम्युनिटी को देना चाहता हूँ। और जैसा टॉर्च बेरर बोलते हैं, पहले जनरेशन वर्क्स वेरी हार्ड और फेल्यूर्स भी आते हैं। आई एम रेडी टू टेक दोज फेल्यूर्स, आई हैव टेकन इट, बट अभी हौसला बुलंद है। तो हमको अचीव करके ही देना है, हमारा कम्युनिटी के लिए और हमारा बच्चों के लिए, उनका बच्चों के लिए। नहीं, फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि ये लेजिस्लेटर्स है। लेजिस्लेशन बनाना यानी ये काफ़ी लाइफ एक्सपीरियंस का ज़रूरी है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पीपल चाहिए, तब जाके ये राइट पॉलिटिशियंस आर नीडेड एट द राइट प्लेस। अदरवाइज ये गलत पॉलिसीज आएंगे तो हाउ इट इम्पैक्ट्स ऑन द चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर द फ्यूचर ऑफ कैनबरा। इसलिए बहुत केयरफुली सेलेक्ट कीजिए। चलिए, सिलेक्शन की बात करें तो आपके दिमाग में और आपके विश लिस्ट में क्या चल रहा है कि मुझे, व्हाट डू यू प्लान टू डू? Yeah, there are many things, मनीष जी। और देखते हुए जो मैंने, शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, बट इट्स ए काइंड ऑफ ए रिकॉर्ड। आई हैव डोर नॉट 6,000 हाउसेस एंड 5 suburbs ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। सो इतना लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, इतना फैमिलीज के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ, और सबसे ज़्यादा सुनाई देता है कॉस्ट ऑफ लिविंग।
cost of living, whether you are a owner of the house, you are suffering. You are a renter, you are suffering. And you are an investor, there's some mums and dads, they are retirees, they invested in an investment house, they are suffering. These sufferings are contributed by the taxes as well. Huge taxes. There's a 8% every year increase कर रहा है हमारा rates. और land taxes इतना exorbitant है. National में highest in ACT. ACT is supposed to be like an utopia, but ये नहीं हो रहा है. इतना सारा डेट आ चुका है हमारा ऊपर. Each family is having $75,000 debt on each family. That is the ACT debt. And every day 2.5 million, you and me, we are paying just interest. So इस situation तक आ चुकी है, तो इसको कैसा करें, and how it makes an impact on the people's pocket so that they can have the quality of life. जैसा ये pressure आता है, people stop going to the dentist or not going to the haircut or beautician, or they are all small businesses are losing a coffee. So, but it makes a huge impact on small businesses and iska consequences on the economy. So, and employment, so many things. We need to address this. So that is the first bigger thing what people are thinking about. So as the Liberal Party, we have announced our rates will not increase like 8% or 9%. It will be 2.2%. और that is the wage price index के साथ चल रहा है. So last 10 years average. So इसलिए that is, there are so many things we are bringing for people, the cost of living to address whatever ACT government level we can do. And another thing, if you look at the fundamental services means लोगों को क्या चाहिए. So number one, housing. So housing affordability is not there. That is, there is a reason for it. This is 23 years of the same government and same way they are working. And if you look at 2 years ago when Whitlam lands were released, ACT is in a biggest advantage situation. That is, ACT government itself is a property developer. Sure. It is not like buying from land or someone is doing that, but this is ACT government. But ACT government was not looking at the demand and supply. The demand was increasing, like 14,000 applications were there for the blocks in Whitlam, and they released 120 blocks. That means it is less than 1% of the blocks released. What it has created is people shifting to the apartments, and apartments are bigger apartments are built by few. So, and another thing, when you are having a family, this is, apartments are not the right place for the children to grow. So we need to have at least some small houses or affordable housing, and these are the things we need to shift this. So that is a big shift we are trying to bring it for the Canberrans, for the families. We are a family focused policies we are bringing. And another thing, the fundamental services I am talking about, health. If any family has gone to the emergency department, they know how the system has broken down. They are very important things you were talking earlier about the naming of the hospital or a wing. That is more important than the bringing the specialists or bringing. If you 4 hours or 5 hours just sitting there in an emergency में ऐसा कोई जाता नहीं है. So आधी रात को हम इमरजेंसी में गए तो हमारा पेन है, ये पेन के साथ 4 घंटा 5 घंटा बैठना पड़ रहा है. और अदर डिपार्टमेंट्स, पेडियाट्रिक डिवीजन में वो काफी नहीं है जगह, और इतना सारा प्रॉब्लम्स. जब 23 years of the same government is there, they should have look at that demand supply and investment right जगह में होना चाहिए, बट ये नहीं हो रहा है. तो इसके लिए हम पूरा रॉयल कमीशन लाके, अभी हमारा पॉलिसी आने वाला है. So I may not be able to go into the deeper into telling that, but it will be a cultural shift is बहुत important है. मैंने एक हमारा 210 Indian doctors working in Canberra. Yes, and we have got a conversation with them, and the big thing is the culture in the hospital, which is not right for the doctors. And that's why the senior doctors, they are having their own clinics rather than coming to the Canberra hospital. And another thing is there are so much of regulation
over regulation कर दिया, then doctors are spending more than 50% on writing paperwork rather than treating the patients. So there are a lot of things we need to do. And the third, हम education, हमको एजुकेशन हमारा प्राइमरी स्कूल में ये जरूरी है, मैथ साइंस एंड इंग्लिश सिखाना है, बट नॉट लाइक सम अदर सोशल रेडिकल सोशल इंजीनियरिंग, वो बच्चों को नहीं चाहिए. बच्चों को चाहिए एकेडमिक स्ट्रेंथ और फाउंडेशन चाहिए एजुकेशन में. सो हम सब तो एजुकेटेड है, हम एक कंट्री से दूसरा कंट्री में हम फर्स्ट जनरेशन बैठ के we came all the way to Australia and we are established and our community को देख के प्राउड होता है, इतना अच्छा सा कम्युनिटी स्ट्रेंथ बनाया हमने. इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द एजुकेशन. नहीं है तो मैं गांव में एक भैंस चलाने वाला था और वहां से यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया में आया, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा सा साइंटिस्ट बना था. दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द एजुकेशन. और एजुकेशन को हम अभी एसीटी में नेग्लेक्ट हो रहा है एंड वी आर द लोएस्ट इन नैपलैंड टेस्ट. सो ये एसीटी को होना नहीं चाहिए. 23 इयर्स ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट. सो इसको चेंज चाहिए और एक मौका दीजिए टू मेक दैट चेंज. इफ द चेंज इज नॉट देयर, 4 साल में फिर इलेक्शन आएगा, सो पीपल कैन मेक देयर डिसीजंस. बट एक मौका चेंज का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, एक फ्रेश थिंकिंग का लाना चाहिए. और आपने बहुत सारे टॉपिक्स छेड़े. एक आ जाता है सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का. ट्रांसपोर्ट के लिए भी लोग काफी परेशान हैं और गंगालिन जो कि हब ऑफ मल्टीकल्चरल कम्युनिटी है, क्या सोच रहे हैं, क्या क्या ट्रांसपोर्ट के बारे में? ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि द एसीटी गवर्नमेंट द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग इनटू द ट्रैम rather than putting onto the buses, putting onto the services or the service delivery को छोड़ के it is going onto the things. And simple example, अभी 1.7 किलोमीटर का जो लाइट रेल का एक्सटेंशन चल रहा है. If you have you anyone see the business case, demand supply, कितना लोग सिटी से लेक तक जाना चाहिए. lot we will be going with electrical buses and separate bus lanes which you don't need to put a lot of money into it but the giving the same service. and अगर वो ट्रैम का इसमें जाते हैं तो कैनबरा में टगरनांग पहुंचने के लिए ट्रैम इट विल टेक अनदर 50 years. मेरा लाइफ इतना नहीं है और किसी का लाइफ 200 years नहीं है, so that we can make that. but the technology is changing, people's traveling pattern is changing. अभी आप गंगालिन का बात कर रहे थे. गंगालिन में अभी टेलर, निकोल्स और मॉनक्रीफ, वहां से देर इज नो डायरेक्ट बस टू एनीवेयर. एवरीवन हैज टू कम टू द गंगालिन एंड गेट द ट्रैम. एक डिफेंस पर्सन वाज टेलिंग मी they went for Anzac Day, they came back from Anzac Day by tram to the Gangalin. They missed their bus, then they had to wait at the Gangalin for 2 hours to get another bus because that's a Sunday timetable. So that is not at all acceptable for Canberra. Canberra is one of the what do you say, the best cities in the world. तो लिवेबल सिटी बोलते हैं, यस, इंक्लूसिव सिटी बोलते हैं. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है, जो आप बता रहे हैं, वो थोड़ी सी हल्की सी कमी महसूस हो रही है. जी हाँ दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के और मेरे साथ बात कर रहे हैं डॉक्टर कृष्णा नदीमपल्ली जी, जो कि खड़े हो रहे हैं कैनबरा लिबरल्स पार्टी से फ्रॉम द येराबी कॉन्स्टिट्यूएंसी और फॉर द अपकमिंग एसीटी इलेक्शंस जो कि होने वाले हैं 19 अक्टूबर 2024 की. तो इस बार नहीं, वो जब आप हॉस्पिटल्स का बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल का ये बहुत जरूरी है. जो नॉर्थ साइड मैं नॉर्थ साउथ का बात नहीं कर रहा हूँ, जो पीपल का पास होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए एंड इन टाइम. सो उसके लिए यू आर राइट, बहुत दूर है वो सबब से. अभी जो मैं वही बोल रहा था, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम नॉट putting it negative way, I'm trying to get it into the right place. See, अभी कैलवरी का एसीटी गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है और टेक ओवर करके आई कांट से द नंबर ऑफ dollars they paid because they are not released and so much information हमारा पास नहीं है. But hundreds of millions are paying to the Calvary, and Calvary is a national or global organization, and this hundreds of millions are not going to stay in Canberra. Number one.
नंबर 2, अभी उसको इम्प्रूव करने के लिए अनदर 600 प्लस मिलियन, 700 मिलियंस उसका ऊपर लगाने वाले हैं. सो अगर $1 बिलियन हम लगा देते हैं तो इतना वर्ल्ड क्लास द टॉप एंड ऑफ द हॉस्पिटल नॉर्थ साइड में एक बन सकता था. और वो निकोल्स क्रेस इतना बढ़िया लोकेशन है, इधर बेलकॉनन को भी और उधर गंगालिन को भी, सबको एक्सेसिबल हो जाता था. बट वो प्लान नहीं किया गवर्नमेंट ने, बट दे put hundreds of millions into a hospital which the money is going out of Canberra. And सर्विस कहाँ इंप्रूव कर रहा है? नो, इट इज नॉट इंप्रूविंग देयर by putting that much amount. So that is, and we don't know how much already spent, how much is they have gone into that. We can't change that. So our focus is to bring the top world class hospital into the north side. But uske liye we have to look into the current situation, current agreements and things like that to go for that. And इससे आपने बहुत अच्छा सा पॉइंट रेज किया था जो अबाउट देयर इज द गवर्नमेंट हैज एडेड द नर्स लेड वॉक इन सेंटर. एंड nurse led walk-in center is nurses can't treat the patient like a doctor. And if you are going for a bulk billing to a doctor, they are getting $38. But how much ACT government is paying for each patient at nurse-led walk-in center is somewhere around $200 per patient, per visit, not per patient, per visit. So that much money, it is a wasted. It is a waste, and that there is no business case. There are no answers. There are nothing. They are explaining why it is important, why it is done. Everything, if it is a major thing, they will immediately tell you go to emergency or you go to GP. Then why we need another layer there? So that is means these are the things we need to look into, and Northside Hospital is a must for Canberra. Coming back to Gangalin, you are talking about Gangalin. Mein there is no workplace. There are 40-50,000 of people. They are employees. They are driving out of Gangalin in the morning and coming back to sleep. Achha, This 40, is 50,000. Yes, and this is Gangalin is established not for sleeping, but वहाँ work places आना चाहिए so that the local businesses will improve, some cafes will grow. And if you look at that, there is no bigger shop in Gangalin Mall. Gangalin Mall is shopping center is a big chaotic place. There is no planning, and you can't. So you don't know where you are entering, where you are exiting, and approach ठीक नहीं है, and there are narrow roads around the town center, and it is all over the place. The planning is a big bungle around the Gangalin shopping center. So yeah, there are several things in Amaru. There are two big buildings, and there is a middle car park, and the other car parks are underground in the basement. If you are coming out of the basement, there is no way you can easily come out and go in. So it is not accessible, and children will be just playing, and it is too dangerous that. But it was good. The KC shops. There is one side car parking, and car parking is a big issue across Gangalin. Even in the Taylor, people talk about they are sick of cars on the street parking because there is no parking, enough parking in the houses, because everything is townhouses or apartments, townhouse apartments. This is not the way the Canberra need to be. So these are the bigger issues. There are police is another. So many things are there. Actually, what is happening now is if you call the police, they will ask, is it life threatening? No. Some burglary is there, or I am seeing this crime is happening here. They will say, okay, you report online. That's it. So, and there is the Andrew Braddock, part of the Greens candidate, and that his conversations were there on his social media. Now it is deleted. More police, more crime. Achha. Okay. And means more crime reported. So they don't want to see the crime reported. So that is kind of messages there. So, and we have seen the police numbers are so low per capita in Canberra. Yeah, we have to look at that. Community safety is an important thing.
for ourselves. You know me, I'm in this multicultural communities and serving for our communities for so many years and have a lot of experience. And the vision I'm bringing here, the government, the new government, whoever is coming, should have the public community partnerships. If the community is having a coming together and they wanted to do something, the government should be partnered with that to make that happen, empowering those communities to reach that goal, to give that. And after that, leave that facility with them or that institution with them so that they maintain, and it is not going to be a white elephant for us. So we have to just empower the communities that is lacking. And last elections, all the parties declared that, announced that we will be supporting the multicultural center in Gangalian. Yeah. And it is 4 years and we haven't seen anything has gone into that. They said that pavilion in exhibition grounds. And I'll give you this reference that recently we had so many events happened in that center, and we paid $13,000 to $15,000 for the venue cost. But that associations or our communities are not able to pay that big monies. So we need a big multicultural center. When I'm talking about center, Manishji, this is about a big center of 4,000 people accommodating hall, and there are small halls and small office spaces for each community, big communities, and there will be some hubs like an African hub, Indian hub, an Asian hub, and Pacific hub. And if you go into that hub, you feel like you are in India. And there will be some food court kind of things. And it should be allowed the food coming from the communities, because culturally we are food lovers and we want our food, not a bread and jam or peanut butter putting on the table for our dinner. So because culturally every community need to do that. So this multicultural center is needed in Gangalin. That is our commitment is going on. If you have time, just one more thing, a big thing, what I am thinking is Canberra, what is the strength of Canberra is the multiculturalism. Yeah. And weakness is we are dependent on the public service jobs, APS jobs. So we need to diversify. If you get 23 years of a span of stable government, we could have diversified that. Now my proposal is, we have got all the high commissioners sitting in Canberra. Let us put a high commissioners forum by the ACT government, bring all the people, talk about how we can diversify the businesses, how we can have these collaborations with different nations, then prioritize 1 to 2 nations in each year, and then make that a dialogue, visit them or bring them here, and just bring some businesses. Like if it is talking about India, how we can bring some pharmaceutical companies headquarters here, so that TGA, once the formula is passed, approved by TGA, world is with you. So that kind of strengths we have, but we need to use that. The multiculturalism can really help us to establishing that link. So that is something missing, which as a multicultural person, the strengths I know, our strengths, so we can bring that change. I'm talking about bigger issues and the future. It will change the whole future of Canberra. Whole means like I'm talking about another 20, 30 years. The city will change. So these are the bigger things we need to think when we are talking about the legislation or MLA. So not like the small things or doing Diwali or doing a Holi is not the thing. There are communities, they can do it. They are empowered to do it. But think about bigger things which can make a big difference for all of us. वंडरफुल कृष्णा जी, एंड दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, और जो भी कैनबरा में सुन रहे हैं, कृष्णा जी इज हियर, ही वांट्स अ चेंज। अगर आप भी अगर चेंज ढूंढ रहे हैं तो कृष्णा जी से बात कीजिए। कुछ इश्यूज, पॉलिसीज आपके दिमाग में, जुनून में है कि ये ऐसा बदलाव आना चाहिए, मैं इतने सालों से हूँ या मुझे ये परेशानी हो रही है, तो कृष्णा जी से मिलिए, लिबरल पार्टी से मिलिए, और किसी भी पार्टी के साथ आप बात कीजिए एंड वोट फॉर द राइट कैंडिडेट जो आपको पसंद है। हम खाली यहाँ प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं और कृष्णा जी को हम अपनी बात कहने के लिए हमने यहाँ पे उनको मौका दिया है। तो मैं एज ए रेडियो मनपसंद या CMS कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी कैंडिडेट, किसी पार्टी को।
एक जस्ट एक गिविंग देम ए मौका, जिसे बोलते हैं ना, इनको मौका दे रहे हैं और आप इनको मौका दीजिए तो दे ये कुछ वंडर्स लेकर आएंगे। चलिए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, क्योंकि ये मांग रहे हैं आपका साथ, तो मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। ये प्यारा सा गीत वैजंती माला जी की पिक्चर है और बहुत ही प्यारा गीत, नया दौर से दिलीप कुमार साथ में है। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। तो हाउ टफ इट विल बी फॉर यू टू विन दिस टाइम, एंड दूसरा यही क्वेश्चन है कि लोग आपको वोट क्यों करें? Yeah, this time, see, every election is a challenge. And is this election from Liberal Party only one kind of non-European candidate? That is me. So, and Liberals are, that is pro supporting families and supporting small businesses, which underpins into the so much of employment generation and the whole city growth. So that's why all the multicultural communities I'm the only candidate from Liberals. So that is one thing. And another thing is the life experience, Manishji. Life experience means I have got so much of experience. I know the issues with the communities, and I always tell I'm one phone call away. And I have helped so many families, and their last wishes fulfilled. My father is almost not there and I want to see him, and I arranged that whether this side or that side, and we will have one MLA office doing that service, not just Krishnaji. So that is the opportunity for our community to get there. And I always say that yes, this is the legislation, the MLA. It is not an IT graduate getting into a job. It is not a graduate job. It is not an APS job. Or this is an MLA, means this is the supreme body to make an impact for the whole ACT or the whole future, means a visionary, a strategic way. And I have that vision with my life experiences. I have come from all the way from India to Australia and successfully raised my family, and I have achieved all accolades from Australia as well. So I have got the connections, issues, everything. So I feel like for another 4 years, I can give that best at a different level for our community. So there I am, and always I say I am one phone call away. I never miss any phone. I call back them, and my phone number is 0499 19910. Anyone can make a call, and I am always available. वेबसाइट है आपकी? Yes, krishnanadimpalli.com.au is my website, and Facebook and Insta, all those things are already there. But phone call is just one phone call away, and which is very approachable, easy number. आप भी हमारी तरह 24 घंटे सातों दिन आप अपने Yes. कम्युनिटी के साथ हैं। थैंक यू कृष्णा जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप जैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ कि कोई ना कोई एक हमारा मल्टीकल्चरल कैंडिडेट शुड क्रॉस द लाइन एंड गेट द गोल्ड मेडल। और ये भी ओलंपिक्स की तरह 4 साल में एक बार इलेक्शन आते हैं। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर कृष्णा नदिम्पल्ली OAM, जो कि खड़े हो रहे हैं कैनबरा लिबरल्स पार्टी से और द येराबी कॉन्स्टिट्यूएंसी ACT इलेक्शन में। इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ACT इलेक्शन की सारी जानकारी elections.act.gov.au या elections.act.gov.au पे जाइए। जाते जाते जी आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इलेक्शंस के बारे में पढ़ते रहिए और फॉलो करते रहिए कैंडिडेट्स को। एंड ओलंपिक्स बहुत बढ़िया। ऑजी ऑजी ऑजी, ओए 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 और चक दे इंडिया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ लवली संडे। बहुत बढ़िया हो गया। थैंक यू।